So, hello students, I am Praveen Tripathi welcoming you in the information technology session. In the previous session, we have understood the characteristics and the fundamentals of computers, and we have also understood the memory and what are the different kind of categories of computer and the different kind of characteristics of a computer, how computer works internally. And we have seen the random access memory, which also means the RAM. Now it's time to understand the another type of primary memory, which is known as ROM, which means read-only memory. Okay, so it is generally used in startup operations of computer. It is a non-volatile primary memory. What do you mean by the non-volatile is the non-volatile means whenever the power will be switched off or the power will be cut off, it will not just halt all our program. Okay, so it is not dependent on the electricity also. If the electricity will get off, it will not erase our data. So that's why it is known as the non-volatile primary memory. Whenever our computer started or boost, then it require first ROM, that means the read-only memory. Read-only memory is also used for the bulk storage. The huge amount of data storage is also can be achieved by the read-only memory. So further it may be classified as the ROM, PROM, EPROM, double EPROM. What is this? PROM means programmable ROM. Programmable ROM is nothing but where we can give our instruction according to ourselves. Okay, and the erasable programmable ROM, that means the EPROM. Erasable means it can be erasable, that means it have the facility to read and write as well as to erase our data. And then electrically erasable programmable ROM, that means electrically erasable, we can erase our data whenever it will not used by us by electrical mode. So this is how we have understood the RAM and ROM. Now it's time to understand what is the secondary storage. So yes, as the name suggested, it is known as the secondary storage of a computer system because it is external to the computer system. Why it is external to the computer system? Because it is not fixed explicitly, it is not fixed in the implicitly mode of the computer system. It is fixed in the explicit mode. What do you mean by the explicit mode? That means we just plug the secondary storage the externally. For example, the magnetic tapes, compact disc, pen drives, DVDs are all examples of the secondary storage. So these are not directly connected to the CPU. That's why they are known as the secondary storage, because whenever we plug the secondary storage, it will not directly just connect it to the CPU. It will connect it first to the primary memory, then primary memory will travel to the CPU. Okay, now the very important memory is the cache memory. Okay, cache memory is a very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU. Semiconductor means the device which use the silicon chips. Okay, so cache memory is very fastest memory in the CPU, and it acts as buffer between the CPU एंड दी मेन मेमोरी. अगर आप देखेंगे तो सीपीयू और मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के बीच में जो बफर होगा यानी कि जो एक ब्रिज की तरह काम करेगा वो कौन होगा? कैश मेमोरी. इट इज यूज्ड टू होल्ड दोस पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम व्हिच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू. तो चलिए देखते हैं कि अगर आपका कोई भी एक प्रोग्राम लोड होता है, कोई भी एक, जैसे आपने टास्क दिया, अगर आपने कोई एमएस वर्ड खोलना चाहा तो एमएस वर्ड का जो आपने डबल क्लिक किया, सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में इनिशिएट हुआ. प्राइमरी मेमोरी में इनिशिएट होने के बाद जो भी हमें डेटा चाहिए, टूल्स चाहिए, जो भी हम जो करंट स्टेट यानी एक्टिव स्टेट पे काम कर रहे होते हैं, वो एक्टिव स्टेट सबसे पहले कैश मेमोरी में जाता है और कैश मेमोरी के बाद से वो सीपीयू उसको हैंडल करता है, स्केड्यूलिंग करता है और मैनेजमेंट करता है. ओके, the part of data and programs are transferred from the disk to cache memory by the operating system from where the CPU can access them. Yes, it is not very new for us. We all know that CPU contains the operating system and operating system controls the cache memory. So here we have understood the cache memory. What are the advantages? Cache memory is faster than main memory. Okay, faster होती है क्योंकि ये directly CPU से connected होती है और CPU के सबसे पास की memory जो होती है वो cache memory ही होती है. It consumes less access time as compared to main memory. Main memory से थोड़ा सा इसका access time कम होता है because ये CPU से पास में होती है. फर्स्ट रीजन. दूसरा रीजन, ये बहुत ही अमाउंट में छोटी होती है और ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है. अगर कम अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करेगी तो जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है, जो इसका एक्सेस टाइम है, वो भी कम ही रहेगा.
It stores the program that can be executed within a short period of time. Yes, as I have told you that cache memory only contains those amount of data which is which has a short period of time execution. ठीक है, जिसका execution time बहुत ही छोटा होता है, वो उसी डेटा को ही contain रखती है. It stores data for temporary use, और ये डेटा को temporary use के लिए रखती है. आप कैश मेमोरी में अपना permanent डेटा कभी नहीं रखेंगे. So this is how we have understood the cache memory. Now the next topic is the control unit. बहुत easy unit है control unit. It is responsible for coordination between the different units of a computer. It controls the input, processing and output operation. तो जैसा कि इसका नेम ही है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये सारी कंट्रोलिंग करता है, लॉजिक्स को भी कंट्रोल करता है. ठीक है, तो ये इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट ऑपरेशंस जो होते हैं उन सभी को यही कंट्रोल करता है और मैनिपुलेट करता है. For example, it coordinates with the peripheral devices to accept the input or display the output. Peripheral devices कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह. ठीक है, इनसे मान लीजिए आप कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, माउस से इनपुट दे रहे हैं, तो ये कौन कोऑर्डिनेट कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट ही कोऑर्डिनेट कर रहा होता है. इट इज लाइक अ मैनेजर ऑफ ऑल ऑपरेशंस, और ये सभी ऑपरेशंस का एज अ मैनेजर आप इसको समझ सकते हैं. The manner in which the program is to be executed is managed by the control unit of the computer. यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी प्रोग्राम है, जो कुछ भी आपने टास्क दिया है या जो कुछ भी आप परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो किस हिसाब से, किस तरीके से, द मैनर, वो कौन डिसाइड करता है? कंट्रोल यूनिट. CPU is considered as the brain of the computer. Yes, CPU performs all types of data processing operation. It stores data, intermediate results and instructions. Okay, it controls the operations of all parts of the computer, और ये कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है. अब आती है नेक्स्ट यूनिट जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बहुत ही सिंपल है. दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू सबसेक्शंस, नेमली अर्थमेटिक सेक्शन, सेकंड लॉजिक सेक्शन. अर्थमेटिक सेक्शन जैसा कि इसका बहुत ही इजी से समझ सकते हो, जो कि अर्थमेटिकल चीजें होती हैं, जो कैलकुलेटिव चीजें होती हैं, वो जो फंक्शन होते हैं वो कौन यूनिट करता है? अर्थमेटिक सेक्शन. जैसे कि फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. All complex operations are done by making repetitive use of the above operation. अगर आप लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन दे दिया जाता है मैथमेटिकल, तो आप भी क्या करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ही एक रिपीटेटिव यूज को करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. यही सेम बात होती है कंप्यूटर सिस्टम में. अगर आपको वहां पर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन मिलती है कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो भी उनका रिपीटेटिव यूज करके उन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है. अब बात आती है लॉजिक सेक्शन. लॉजिक सेक्शन में जो भी आप लॉजिक लगाते हैं वो कौन सी यूनिट में एग्जीक्यूट होता है? वो होता है एएलयू के लॉजिक सेक्शन में. जैसे कि आपका कंपेयरिंग हो गया, सेलेक्टिंग हो गया, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डेटा. Output. The result of processing carried out by the computer is often directed to the display device such as the monitor or printer. जो भी हमारा इनपुट था उसके बाद जब वो कुछ प्रोसेस हुआ, तो प्रोसेस होने के बाद जो डिजायर रिजल्ट आता है या जो हमारा एक मनचाहा रिजल्ट होता है या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट, वो कौन दिखाता है? डिवाइसेस दिखाती हैं, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर. तो यही जो है, यही आउटपुट यूनिट कहलाती है. Other form of devices are not uncommon. For the example, the computer में output music और video. तो कंप्यूटर म्यूजिक जो है हमें सुनाता है, वीडियो जो दिखाता है, ये सब क्या है? ये आउटपुट है. और इनको कौन एग्जीक्यूट करता है? आउटपुट यूनिट. अब देखिए, ये है एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है कि ये इंटरनली कैसे कंप्यूटर सिस्टम पूरा कंबाइंड है, पूरा असेंबल्ड है, वो एक इसका ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड है. देखिए, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर 3 सिस्टम यूनिट से बना हुआ है: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट. तो इनपुट डिवाइसेस हो जाएंगे इनपुट यूनिट में, आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे आउटपुट यूनिट में, और सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट. सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम इज. Now, inside the computer, there are various type of computer in the market these days. Desktop personal computer, popularly known as PC. अभी आप सभी को पता है कि कंप्यूटर खूब सारे हैं, जैसे कि पीसी है, लैपटॉप जिसे हम नोटबुक भी बोलते हैं, एक ऐसा स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन इजीली पुट ऑन योर लैप, ओके, जो कि हमारे गोद पे आराम से रखा जा सके. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लैपटॉप. टैबलेट, अ लाइट कंप्यूटर ऑफ द साइज ऑफ अ हैंडबुक के साइज का होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस टैबलेट. और ऑफन यूज्ड फॉर वर्किंग ऑन द इंटरनेट, और ज्यादातर इंटरनेट एक्सेस के लिए टैबलेट का यूज किया जाता है.
मोर एंड हाउ कि हम पीसी लैपटॉप को भी इंटरनेट यूजेस के लिए ही ज्यादातर यूज करते हैं. If we look at a personal computer from outside, it looks like a box, sometimes called CPU. अगर हम बाहर से देखें अपने CPU को, अपने जो भी है पर्सनल कंप्यूटर को, तो बस ज्यादा से ज्यादा क्या दिखेगा हमें? एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है, माउस है और एक CPU है, यानी कि जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है. That contains CPU and hard disk, keyboard, mouse, monitor and speakers. The keyboard, mouse, speakers, printer and other attachment like scanner constitutes the peripheral. मैंने आपको बताया था peripheral devices कौन कौन सी होती हैं? Keyboard, mouse, speakers, printer, other devices. ठीक है. The major functionality in a computer is done in the processing unit. और ये सब हमको पता ही है कि जो major जो functionality होती है, जो major operation होता है, वो कौन करता है? Processing unit. That means the CPU, क्योंकि CPU के अंदर ALU होता है, यानी arithmetic and logical unit, control unit होता है और memory unit होता है. प्रोसेसिंग यूनिट टेक्स इनपुट एंड प्रोसेसेस इट थ्रू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी हम प्रोग्राम देते हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसी के हिसाब से वो इनपुट हमारा लेता है और उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करता है और फिर उस इनपुट के हिसाब से, उस प्रोसेसिंग के हिसाब से वो जो हमें रिजल्ट देता है वो आउटपुट यूनिट हमें शो करता है. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन 1. एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस यूनिट इज डिवाइडेड इन द 4 categories, 4 session. So we have completed our session 1, which is about the fundamentals of computer. So the next session is about the components of computer. Then we will cover it in the next session. So until then, take care. Bye bye.